बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट्स मेडिसिन, मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। सपोर्ट्स मेडिसिन की क्या इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री। अगर हम बात करेंगे सपोर्ट्स मेडिसिन की, सपोर्ट्स मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में डील्स विद द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, rehabilitation and management of different athletic injuries. This may include, ये ट्रेनिंग में भी हो सकता है, it may be injury during training, it may be injury during supports any activity, during any supports activity. We have to prevent injuries, we have to address supports conditions, overall physical condition of the body, या participation of various athletic events. इन सब में हमें look after, we have to supervise the different participants, their injuries, their rehabilitation. We have to improve the athlete's performance during an event by modifying his medicine, diets, exercises, health supplements, then average demand on the athlete's body. अगर हम बात करेंगे supports medicine की, there are four aspects. There are different aspects by which we can look after the supports medicine, by which we can look after the conditions, the availability of the supports medicine. अगर हम पहले बात करेंगे that is the preparation की, the four aspects ये है preparation, prevention, surgical techniques, number 4 rehabilitation. Number first अगर हम preparation की बात करेंगे, preparation में हमें क्या होता है? Preparation is a condition where we have to prepare ourselves for the different supports medicine, for the different supports related terms, for the different medicine, for the different activity. Like we have to prevent, we have to make preparation, we have to use the diet, we have to use the proper exercise, we have to monitor the practice session, we have to monitor the activity session. In order to improve the performance, we have to prevention, we have to make the different kind of preparations to improve the performance, to improve the feasibility, to improve the physical fitness. Number 2, that is the prevention. Prevention identifies any predisposition to the injury. We have to prevent the different kind of injuries. Prevention में क्या होता है? We have to identify the different injuries. We have to improve them. We have to improve the illness. We have to prevent the illness. We have to prevent the different warm up, cooling down techniques. We have to design the different protective equipment in order to prevent the different kind of disease, in order to prevent the different kind of illness, in order to prevent the different kind of injury. Number 3, that is the many surgical techniques in supports medicine. There are different kind of techniques that we have to use. The different kind of techniques in supports medicine, particularly जैसे कि the fractures, the injuries are now very general, but we have to develop the different kind of techniques in order to we have to treat first aid, we have to make the first aid, we have to make the different kind of techniques, we have to use the different kind of techniques in order to minimize much more worst situation of the disease. We have to avoid the supports, we have to use the medicines in order for the different surgical techniques. We have to make the general improvement in our strain, in our stress, in our different techniques used to rehabilitate. Number 4, that is the rehabilitation. Rehabilitation means prepare an individual or an athlete to return his activity, to return नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, क्या उसको रिटर्न करना है। अगर हम देखेंगे कि मेडिसिन इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट इफेक्ट्स द फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूड्स द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट इंजरीज जो होते हैं। सपोर्ट्स मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन, जैसे कि क्लिनिकल सपोर्ट्स मेडिसिन होता है, सपोर्ट सर्जरी होती है, सपोर्ट्स फिजियोलॉजी होती है, एक्सरसाइज। क्लिनिकल सपोर्ट्स की बात अगर हम करेंगे, दैट इंक्लूड्स द प्रिवेंशन, जिसमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आता है।
अगर हम एथलीट्स इंजरी के बारे में बात करेंगे तो उसमें एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सपोर्ट सर्जरी इज ऑल्सो द ट्रीटमेंट फॉर द इंजरी फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स ह्यूमन्स ऑब्जेक्ट्स. फिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, फिजियोलॉजी हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस इन सपोर्ट्स मेडिसिन. It involves the study of the physio. It involves the study of body responses, physical fitnesses. It comprises of size, fitness, preservation of fitness, role of fitness, prevention, treatments क्या है, designs क्या है. अगर हम बात करेंगे सपोर्ट्स मेडिसिन के हिस्ट्री ऑफ द सपोर्ट्स मेडिसिन, वो है कि फ्रॉम द एंशिएंट सेंचुरीज, फ्रॉम द 5th 6th सेंचुरीज अगर हम देखेंगे, ग्रीक, रोमन्स, there were the people who participated in these conditions कि सपोर्ट्स मेडिसिन की खोज कर रहे थे. जो सफर होते थे इंजरीज से, फिजिकल एजुकेशन focused on the training and proper training conditioning of supports. It allowed many youngsters players. और भी बहुत सारे ओलंपिक्स में भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1968 से कि ऑर्गेनाइज किया कि डॉक्टर्स की एक टीम होनी चाहिए वहाँ पे. They will look after. Many doctors are now involved in treating, maintaining wellness of the team. Physios रखे गए. इससे पहले इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं था, but there was very much importance. Physios, coaches के साथ साथ physios भी रखे गए कि जो कि बॉडी और physiological aspects की नकलबंदी करेंगे. Well, there has very much importance. Supports physicians has very much importance in physical education. And they are involved with the athlete training, planning, monitoring, rehabilitation. ये सब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. और क्योंकि that increases the stamina, that increases the performance, it has very much importance in supports medicine. But the 4 important perspectives are preparation, prevention, surgical techniques, and rehabilitation has very much importance.